हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग को टेस्ट 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी का चल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ द टेलीग्राम आईडी, स्टडी विथ पीके Q&A। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, consider the following statements with reference to steppe climate। ओके, steppe climate के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज द steppe type of climate in both the north and southern hemisphere has the extreme winter and summer. Is it true? No, it's not true, because steppe type of climate in it's not both, it's in only one, which is the northern hemisphere has the extreme winter and summer, not in southern hemisphere. Okay, so first statement is incorrect. And if we are talking about southern hemisphere, receives moderate temperature in summer and winter season, okay, due to its proximity with the sea. Next is the steppe type of climate found in the tropical region in the world. Is it true? No, it's not a correct statement, because region of steppe climate are temperate grassland. Okay, temperate grassland. In the northern hemisphere, the steppe type of climate can be found in Eurasia, जिसको steppe बोलते हैं, and continental Europe. And the southern hemisphere, the steppe type of climate can be found in Argentina, which is called Pampas, and South Africa, which is called Wild. Okay, and ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला था? डाउन्स, एंड नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, एंड एशिया में स्टेपी. ओके, let's come to the next. So answer for this question is option number D, neither 1 and neither 2 is correct statement. Let's come to the next question, which is with reference to the plate tectonic theory. Okay, first statement is it was proposed by American geologist Harry Hess in 1961. No, it's a incorrect statement, because Harry Hess ने sea floor spreading, हैरी हर्स ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ओके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग in 1961. So statement 1 is incorrect. And if we are talking about plate tectonic theory, तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने, एंड मॉर्गन ने, एंड पार्कर ने. किसने किसने दिया था? तो हॉल्ट मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन. वो भी किस में? 1967 में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच इज the plate are composed of both continental and oceanic. Yes, it's a correct statement. Next is the movement of hot softened mantle below the crust causes the plate movement. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B, which is 2 and 3 only are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to warm temperate eastern margin climate. Okay, if you are talking about warm temperate eastern margin climate, first statement is it experiences extreme temperature with scarce rainfall. No, it's not correct statement, because ये moderate temperature है and moderate rainfall also. So first statement is incorrect. Next is it is found in the southeastern USA, bordering of Gulf of Mexico and Paraná, Paraguay, Uruguay basin. Okay, it's a correct statement. Next is this climate can only support the lowest form of vegetation, mosses, lichens and sedges. This is not correct, because ये अगर है this climate can only support the lowest form of vegetation, mosses, lichens and sedges, ये तुंद्रा type of vegetation में है. ओके, ना कि वार्म टेम्परेट मार्जिन में. ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन दी तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है? तो वो आर्कटिक एंड पोलार रीजन में. ओके, पोलार क्लाइमेट में.
So answer for this question is option number A, which is only one is correct, which is option B. And if you are talking about world's climate distribution, okay, if you are talking about the world climatic region, तो उसमें टोटल 9 climatic region है. Let's make it easy for you. For example, this is world, ठीक है, and this is 0 degree and 30 degree, 45 degree, 65 and 90. Okay, then दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. एंड इक्वेटोरियल जोन में आ जाएगा हमारा कौन सा, तो वो हो जाएगा हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ओके, ये नॉर्थ का है. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 30 डिग्री विच इज कॉल्ड हॉट जोन, उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें इसको डिवीज़न किया गया है 3 ये बेसिस पे. ओके, सो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, हॉट डेजर्ट. ओके, जिसमें हो जाएगा डेजर्ट वेजिटेशन. नेक्स्ट इज यहाँ पे हो जाएगा सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज़ कॉल्ड सवन्ना एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसी में आ जाएगा. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन विच इज़ कॉल्ड मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि ईस्टर्न मार्जिन में हो जाएगा. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 45 डिग्री में, जो कि वार्म टेम्परेट जोन है, उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में हो जाएगा मेडिटेरेनियन टाइप एंड फॉरेस्ट एंड स्ट्रब्स, इसमें आ जाएगा. एंड दिस वन इज सेंटर में हो जाएगा स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड नेक्स्ट हो जाएगा इसमें ईस्टर्न साइड में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि वार्म वेट फॉरेस्ट है. एंड अगर हम 65 में आ जाएंगे तो इसमें हो जाएगा वेस्टर्न में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, डिसाइडियस फॉरेस्ट. एंड इसमें सेंटर में हो जाएगा साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट. एंड इसमें हो जाएगा लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है, ठीक है, ईस्टर्न में, वो भी 65 डिग्री नॉर्थ में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री विच इज़ कॉल्ड आर्कटिक और पोलार रीजन में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हो जाएगा तुंद्रा वेजिटेशन एंड मॉसेस लाइकेंस इसी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा था. ओके, से ये रहा टोटल 11 हमारा क्लाइमेटिक रीजन इन द वर्ल्ड. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following pairs of famous places or rivers situated किस रिवर में है. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट इज उज्जैन. क्या ये सिप्रा रिवर में सिचुएटेड है? जी हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्टली मैच है. और यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट. सो अयोध्या कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो है सरयू रिवर पे. ओके, ना कि गोमती में. और अगर हम सरयू रिवर की बात करते हैं तो ये ओरिजिन कहाँ से होता है? मिदान ग्लेशियर, नेपाल हिमालय से, जिसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है. और ये जाके ज्वाइन करता है कहाँ पे? तो घग्गर को. और घग्गर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है घग्गर. फिर घग्गर जाके गंगा में ज्वाइन कर जाती है. ओके, सो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्ड इज श्रीनगर झेलम. श्रीनगर क्या झेलम नदी के किनारे हैं? जी हाँ, ये करेक्ट है. नेक्स्ट है मदुरई कावेरी रिवर के किनारे है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वैगई रिवर के किनारे हैं. ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. और वैगई रिवर जो है नारू सनादू हिल से ओरिजिनेट होता है, पेरियार प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न घाट रेंज. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज ओनली 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर लेक्स मूविंग नॉर्थ टू साउथ. ओके, फर्स्ट इज हो जाएगा इसमें लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिया, लेक क्या है? लेक मालविया. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज
Consider the following pairs, river and waterfalls करेक्टली मैच। तो इसमें नर्मदा रिवर धुआंधार वाटरफॉल करेक्ट, सुवर्ण रेखा हुंड्रू जो कि झारखंड में है करेक्ट, चंबल चूलिया यस इट्स करेक्ट, मांडोवी दूध सागर यस इट्स ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द above are correct which is option D. Let's come to the next question, which is which of the following can be considered as a primary reason for the formation of Labrador Current? First is the diversion of Gulf streams towards the west coast of Greenland. No, it's not a correct statement. Inflow of cold melting water coming from the Arctic region. Yes, it's a correct statement. और अगर इसको हम मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो वो किस कहाँ पे होगा, तो सपोज दैट ये नॉर्थ अमेरिका है एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीनलैंड, तो यहाँ से ये लैब्राडोर करंट आ रहा है। ओके, Next question is Agra and Darjeeling, despite sharing the same latitude, exhibit notable differences in vegetation. Which of the following factors primarily determines this disparity in vegetation between two regions? तो वो क्या हो जाएगा, difference of altitude in regions, which is option D. Okay. Next question is consider the following countries. How many of the countries share land boundaries with India? ओके, यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज पूछा है तो बांग्लादेश करता है जी हाँ, चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका तो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, एंड म्यांमार यस इट्स अ करेक्ट। और अगर हम इसका सीक्वेंस वाइज में बात करते हैं तो फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा, पहला में आ जाएगा बांग्लादेश जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, कितना 4996.7 किलोमीटर। एंड सेकंड में हो जाएगा चाइना, एंड थर्ड में हो जाएगा पाकिस्तान, फोर्थ में नेपाल, एंड फिफ्थ में हो जाएगा म्यांमार, एंड सिक्स्थ में हो जाएगा भूटान, एंड सेवन में हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ओके, जो कि सिर्फ सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शेयर करता है, वो कितना 106 किलोमीटर ओनली अफ़गानिस्तान। और किसके साथ करता है, तो इंडिया के लद्दाख से, जो कि एक अभी न्यू टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर को ये करके 2019 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement is some rivers of the northern plains show a dendritic pattern river. Yes, it's a correct statement. Next statement is when the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles, pattern is known as trellis pattern. Yes, it's a correct statement. So option for the answer for this question is option number C, which is 1 and 2 both are correct. Next question is with reference to river Satluj, consider the following statements. First is river Satluj river originated near Mansarovar and Tibet goes to Sipkila Pass in the Himalayas. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is river Satluj feeds the canal system of Bhakra Nagal projects. It's also correct. Next is river Ravi meets Satluj near Harike at the right bank tributaries. No, it's not river Ravi, it's river Bias. Okay, so statement third is incorrect. So answer for this question is option number A, which is only 1 and 2 are correct. Okay, let's now come to the next question, which is consider the following statements regarding Lakshadweep. Okay, first is the entire group is built of coral deposit. Yes, it's a correct statement. Next is the maritime boundary between the Maldives and India. Lakshadweep runs through the 8-degree channel. It's also correct. Next is Saddle Peak is the highest peak in the Lakshadweep. No, it's not a correct statement. Saddle Peak कहाँ पे है, तो हो जाएगा located at the northern अंडमान आइलैंड। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि लक्षद्वीप का हाईएस्ट पीक कौन सा है और क्या नाम है उसका। ओके,
So answer for this question is option number B. Okay, which is only 2 is correctly matched. Correct. Next question is Gandhi Sagar Dam is located on the river of. किसमें गांधी सागर डैम लोकेटेड है? तो हो जाएगा चंबल में. ओके, और चंबल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में. ओके, और बराकर रिवर में कौन सा डैम बना हुआ है? तो मैथन डैम बना हुआ है जो कि झारखंड में है. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा रिवर में कौन सा डैम बना हुआ है? तो नागा अर्जुन सागर डैम. ओके, जो कि बॉर्डर में लोकेट करता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट भागीरथी रिवर, इसमें कौन सा डैम बना हुआ है? तो टेहरी डैम बना हुआ है जो कि टॉलेस्ट डैम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर climate region. Okay, which of the following climate region is the best reflect the mention of the above feature? Okay, first is summer is dry and warm while their rainfall in winter. Trees have small broad leaves are widely spaced leading to the absence of shades. This climate is viticulture and wine production economic activity. ये तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप का है. So answer for this question is Mediterranean climate. Okay, next question is consider the following statements with reference to Eastern Ghat and Western Ghat. Okay, if you are talking about Eastern Ghat and Western Ghat, first statement is the highest peak of the Western Ghat is Anaimuri. Yes, it's a correct statement. Next is highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri. Yes, it's also correct. Next is Eastern and Western Ghats are meet each other in the Nilgiri. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is all of the above are correct, which is option D. And if we are talking about Western Ghat का different names है such as सह्याद्री महाराष्ट्र में बोला जाता है एंड नीलगिरी इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड अनाईमलाई हिल एंड कार्डमम हिल इन केरला. अनाईमलाई हिल एंड कार्डमन इन केरला. ओके, एंड कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट जो हायर एलिवेशन है जो कि कंटिन्यूअस है दैन दी ईस्टर्न घाट. एंड एवरेज एलिवेशन कितना है इसका? 1500 मीटर एंड इंक्रीजेस from north to a height increases from north to south. And if we are talking about most of the peninsular rivers originate in Western Ghat, that is Kaveri and Krishna for examples. And if we are talking about Eastern Ghat, discontinuous and low hills, highly eroded rivers such as Eastern Ghat में Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. And some important ranges include the Javadi Hill, पालकोंडा रेंज एंड नालामलाई हिल एंड महेंद्रगिरी. और महेंद्रगिरी क्या है? हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements with reference to the atmospheric temperature, change in atmospheric temperature. Okay, first statement is the temperature in the troposphere. First statement is temperature in the troposphere and stratosphere tends to increase with a rise in altitude. No, it's not correct statement because temperature in the troposphere tends to increase with the rise of altitude but not in the stratosphere. So statement 1 is incorrect. Stratosphere में क्या होता है कि altitude अगर increase करेगा तो देन टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा और इसको क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर इन्वर्जन.
नॉर्मल नहीं, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। और जब किसी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब लाइक एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर में इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद द एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज करता है अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट, ओके। और नॉर्मल लैप्स रेट कितना इंक्रीज होता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी 1 किलोमीटर, ओके। सो let's come to the next statement. First statement is incorrect. Next statement is temperature tends to decrease with height due to heat energy of the sun radiate back from the earth. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number D, which is statement 1 is incorrect and the statement 2 is correct, okay. Next question is, these are the most widespread forest of India. They are also known as monsoon forest and spread over the region receives rainfall between 70 centimeter to 200 centimeter. Trees of the forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. These forests exist mostly in the eastern and rainier part of the peninsular plateau of the country. The most dominant species of this forest are bamboo, sal, teak, and peepal. Above the paragraph, which type of vegetation it is? It is tropical deciduous forest. Okay, so option B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to tropical cyclone. Okay, if we're talking about tropical cyclone, it is extremely rare for tropic tropical cyclone for within a few degree of the equator. Yes, it's a correct statement. Next is the Coriolis force is negligible at the equator. Yes, it's a correct also. So answer for this question is option number A, which is both statement 1 and 2 are correct and statement second are the correct explanation of statement 1. Okay, let's come to the next question, which is with reference to Old Chicky script. Okay, Old Chicky script. First statement is it is used to write Mundari language. No, it's not a correct statement because ये मुंडारी लैंग्वेज के लिए नहीं, संथाली के लिए होता है, ओके। ओल्ड चिकी लैंग्वेज and script, sorry, and it was derived by the Pandit Raghunath Murmu. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. And if we are talking about Santhali language, which is a part of its schedule, okay, but it's not originally in this its schedule. It is added by the 92nd Constitution Amendment Act 2003, and with Santhali 3 more languages are added in the its schedule, which is Bodo, Dogri, and Mathili, okay. And if you are talking about its schedule, which is talking about languages, so there is total how many languages, which is 22, but originally it is only how much, which is 14, okay. After that 15th number language was added with the 21st Constitution Amendment Act 1967, which is Sindhi. And if we are talking about 16, 17 and 18, which is then after 71st Constitution Amendment से ऐड किया गया था नेपाली, Manipuri and Konkani, 3 languages, okay. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. And let's come to the next question, which is term Hori Haba. Hori Haba is used in the context of tribal community in Northeast. No, it's a traditional bull sport in South India. Yes, it's a correct statement, which is option B. और ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये स्पोर्ट जब खेला जा रहा था तो एक बच्चे की जान चली गई थी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
और ये फेस्टिवल जो है वो कर्नाटका में ड्यूरिंग दिवाली टाइम सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, next question is, consider the following statements with reference to tropical monsoon climate. First is, tropical monsoon climate receives heavy rainfall throughout the year. Is it true? No, it's not true, because tropical monsoon climate has onshore wet monsoon in the summer and offshore dry monsoon in the winter. So statement first is incorrect. Next is, forests in tropical monsoon climate are usually evergreen. No, it's also not correct, because forests in the tropical monsoon climate are usually shed their leaves to withstand the drought. And if you're talking about tropical monsoon climate, it's three characteristic distinct seasonal, which is summer, winter, and rainy season. Okay, let's come to, so answer for this question is option number D, which is neither one and nor two is a correct statement. Next question is, consider the following statements. First is, Google LLC has recently introduced by JAMA, which is a new search engine. No, it's not a search engine. It's a open AI model. Okay. So first statement is incorrect. Next is, JAMA will help in the encrypting the online contest of the. No, it's not a. ये search engine है ही नहीं. So क्या हो जाएगा ये? Google also noted that both the models are lightweighted enough to run directly on the developer's laptop or desktop computer. Okay, so answer for this question is option number D, which is neither one neither two is correct. Let's come to the next question, which is, which of the following is directly source of study of interior of the earth. Okay, if we are talking about डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन. जी हाँ, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्या? वॉल्केनिक इरप्शन. और ये मेटियोराइट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड सिस्मिक वेव, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट. ओके, सो और भी अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हो जाएगा? सरफेस रॉक, वॉल्केनोज, माइनिंग प्रोजेक्ट, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. ये हमारे सारे डायरेक्ट सोर्स में आएंगे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट सोर्सेज, विच इज टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन, सिस्मिक एक्टिविटी, मेटियोराइट्स, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे हमारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज में. ओके, so answer for this question is option number A, which is volcanic eruption. Okay, let's come to the next question, which is, consider the following statements regarding the soil flow or soil flow. Okay, so first statement is soil flow and soil flow ka, which is, soil flow occur when the soil is completely devoid of moisture. No, it's not correct statement, because when the soil is completely saturated with water and individual particles are almost suspended in the water and move easily one another and have underlying rock, the soils act like a liquid and a soil flow or mud flow occurs. So first statement is incorrect. Next statement is, soil flow is not possible in the tundra and arid region. It's also incorrect, because it is possible. Soil flow is possible in the tundra and arid region when layer of frozen ground thaw. Okay, so statement second is also incorrect. Statement third is, in Ireland, bog burst are related phenomena. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A, because यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो ओनली वन इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन डी. ओके, नो, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट. ओके, रिगार्डिंग द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट floods. Okay, glove. So first statement is, they are associated with glacier lakes formed over a moraine named meltwater. Yes, it's a correct statement. Next is,
Retreat expansion of glacier lakes increase the probability of glow. Yes, it's a correct statement. It is not advisable to practice slash and burning in glow prone areas. Yes, also correct. एंड यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कार्बन कैन लेस द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा ये करेगा बिकॉज इनकमिंग सोलार रेडिएशन एब्जॉर्ब इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ग्लेशियर नॉर्मल रहता है तो वो वाइट रहता है, ठीक है, और जब रेडिएशन आता है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. बट अगर वो ब्लैक रहेगा या डार्क रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. Next question is, recently India has ranked 38th on the Logistic Performance Index in 2023. This index is released by, ये इंडेक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 6 पैरामीटर्स होता है इसको परफॉर्म को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है. फर्स्ट इज कस्टमर्स परफॉर्मेंस, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, नेक्स्ट इज ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, एंड नेक्स्ट इज consignment tracking and tracing, next is timeless of shipments. Okay, and if you are talking about दिस वर्ल्ड बैंक एवरी 2 years में ये एडिशन निकालता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का. एंड इंडियाज़ रैंक इज़ 38th आउट ऑफ हाउ मच 139 कंट्रीज़. एंड ये अभी इम्प्रूव हुआ है 6 प्लेस, ठीक है. पहले कितना था, 44th प्लेस था 2018 में. ओके, एंड ये इम्प्रूव होने का रीज़न क्या है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यूनिफाइड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, interface platform, and logistic data bank. Okay, and let's come to the next question, which is consider the following statements. The trees inside tropic of consider the following statement with reference to tree inside the tropical evergreen forest. Okay, first statement is the tree inside the tropical evergreen forest do not shed their leaves yet. It's a incorrect statement, because the trees inside the tropical evergreen forest do shed their leaves but do not all together. Okay, shed तो करते हैं but सारा एक साथ नहीं करते. Okay, so first statement is incorrect. Next is pure stands of natural vegetation are not found inside the tropical evergreen forest. Yes, it's a correct statement. Next is, in India, these forests are found in the eastern slope of the Western Ghat, the hills of northeastern margin, and Andaman and Nicobar. No, it's not correct statement, because ये eastern नहीं होगा, western होगा. Okay. So answer for this question is option A, which is only one is correct. Let's come to the next question. Consider the following peninsular river. How many of the above flow east to west? Okay, ये हो गया हमारा ईस्ट से वेस्ट की. और कौन कौन से रिवर फ्लो करता है, तो वैगई नहीं होगा, सरस्वती जी हाँ होगा, और वामचंद्रा वो भी होगा. और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करते हैं तो उसमें और कौन से हो जाएगा, नर्मदा, तापी, ये दोनों भी हो जाएंगे. ओके, so answer for this question is only one is correct. Let's come to the next question. Mohorovicic discontinuity or Moho discontinuity lies between which of the following? Okay, so Mohorovicic discontinuity किसके किसके बीच में लाइज करता है, तो वो होता है मैंटल और क्रस्ट के बीच में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट discontinuities, let's draw a figure for make you understand easily. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द अर्थ का एक भाग, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रस्ट, मैंटल, एंड दिस इज
core. Okay, this is core. And if you are dividing it in a inner and outer layer, see, firstly, inner and outer crust is divided by Conrad discontinuity. And if you are talking about mental and crust के बीच में क्या होगा, तो मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में कौन सा होगा, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी. एंड लोअर मैंटल एंड अपर क्रस्ट में कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनर एंड आउटर कोर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. ओके, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि था इनर एंड आउटर कोर में क्या बताए थे, तो वो था लेहमैन. आउटर कोर एंड मेंटल में क्या था, तो वो था गुटेनबर्ग. एंड मेंटल क्रस्ट तो यही हो जाएगा मोहरोविसिक. एंड लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, कॉनराड. Okay, so next question is name the state and water bodies connects. Okay, first is Bering Strait connects with Arctic and Pacific Ocean. Yes, it's a correct statement. Next is Cook Strait, Tasman Sea and South Pacific Sea. It's also correct. State of Balban Mandab, ये भी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव आर correctly match, which is option number 3. Okay, option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statements. First is tokamak is an experimental machine designed to harness the energy of fusion on the earth. Yes, it's a correct statement. Next is the joint European torus is the first device to achieve controlled fusion power. Yes, also correct. So answer for this question is option number C, which is 1 and 2. Both are correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following passages. Soil A is found in the arid and semi-arid region of Western Ghat and Eastern coast in the infertile due to lack of nitrogen and calcium. And soil B develop the area where high temperature and high rainfall and contains large proportion of iron and aluminium. Okay, तो ये कौन सा हो जाए, उर्सा सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Correct answer for this question, which is ursa soil, which means ursa soil is also called saline soil. Okay, so next question is consider the following statements with reference to earthquake waves. First is both the primary and secondary waves are example of surface wave. No, it's not a surface waves. Primary and secondary waves are body wave. Okay, and if you are talking about surface wave भी दो टाइप का होता है. वो हो जाएगा एक लव वेव. next one is Rayleigh wave. Okay, so statement 1 is incorrect. Let's check the statement second. Surface wave are more destructive in nature as compared to body wave. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements. Entire India observe overhead sun on the summer solstice of the northern hemisphere. No, it's not a correct statement because tropical zone being near to the equator experience high temperature throughout the year with small daily and annual ranges, but beyond the Tropic of Cancer, North India does not observe the overhead sun on the summer solstice of the northern hemisphere. So statement first is incorrect. Next statement is as compared to the northern hemisphere, North India,
southern Indian experiences high temperature throughout the year and small daily annual ranges. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number 2, क्योंकि यहाँ tropic of Cancer rapidly through central part of India पूछा गया था. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements reference to coastal climate in India. Coastal climate in India. First is there is hardly any seasonal change in distribution pattern of the temperature in coastal area. Yes, it's a correct. Next is the ocean take much longer to warm up or cool down than the land masses. Which of the statement correct? Statement 2 is also correct. So answer for this question is option number A. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is correct explanation for statement 1. Okay, so answer is A. Let's come to the next question, which is Sathya Mangalam Tiger Reserve, okay, is located in which of the following state, which is in Tamil Nadu. Okay, and if you are talking about Sathya Mangalam Tiger Reserve, junction between eastern and western Ghat in the Nilgiri Biosphere Reserve. Okay, and if you are talking about Karnataka, there is Bandipur Tiger Reserve. Okay, next question is consider the following statements with reference to ocean current. First is ocean current. Most of the hot desert are formed on the western margin of continents. Yes, it's a correct statement. Okay, next is the ocean. The presence of cold ocean current on the eastern margin of ocean leads to area of less precipitation. Yes, it's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number A, which is both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for this statement 1. Okay, so इसमें अगर हम कुछ डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो for example, let's make the world's diagram first. Okay, this is the okay, एक roughly map हम बनाए हैं, please don't laugh. So if we are talking about deserts, first is Great Indian Basin Desert, which is located here, okay, in North America, and Peruvian Desert, which is located in South America, and Atacama Desert in South America. Okay, and if you are talking about Paragonian Desert, which is located in also in the South America, and if you are talking about Sahara Desert, which is this is called Sahara Desert, which is in the African area. Okay, African plate, एंड अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे है, तो अरेबियन डेजर्ट होगा यहाँ पे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट तुर्किस्तान डेजर्ट, दिस वन इज़ तुर्किस्तान डेजर्ट. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दिस इज़ कॉल्ड, यहाँ पे है ग्रेट इंडियन डेजर्ट. एंड गोबी डेजर्ट की हम बात करते हैं तो गोबी डेजर्ट हो जाएगा यहाँ पे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कलाहरी एंड नामीब डेजर्ट, विच इज़ देयर इन द साउथ southern part of Africa. Okay, so next question is consider the following countries. How many of the above borders with the Baltic Sea? Baltic Sea के साथ साथ कितने बॉर्डर शेयर करते हैं? So first is
लातविया, यस, ये शेयर करता है बाल्टिक सी के साथ। लिथुआनिया ये भी करता है। नीदरलैंड नहीं करता है। एंड इस्टोनिया ये भी करता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं बाल्टिक सी में कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, सो सपोज दैट दिस इज बाल्टिक सी एंड यहाँ पे हो जाएगा डेनमार्क, दिस वन इज स्वीडन, there is Finland, there is Russia, there is Estonia, next is Latvia, next is Lithuania, and here is Poland, and here is Germany. ओके, ये सारे स्टेट हैं जो कि ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड जर्मनी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मार्शल आर्ट। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिलाम्बम मार्शल आर्ट जो कि फेमस है कहाँ पे? तमिलनाडु में। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज थांगता, ये सिक्किम में नहीं होगा, ये हो जाएगा मणिपुर में। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गटका, ये पंजाब में है, ये भी सही है। तो करेक्टली मैच कौन सा है? ओनली टू, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर वन विच इज़ कुट्टू वारिसाई, वारिसाई ये कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर वन ऑल्सो कलारी पयातू, कलारी पयातू ये कहाँ पे हो जाएगा? केरला में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements with regard to social forestry. Okay, first is urban forestry. Urban forestry pertain to the raising and management of trees on public land only. No, it's not a correct statement क्योंकि ये public and private both के लिए होगा. For example, parks. And next is agroforestry. Okay. Next is agroforestry is a rising of trees and agriculture crop on the same land inclusive of the waste patches. Yes, it's a correct statement. Next is community forest involves the rising of trees public, private and privately owned community land. No, it's not a correct statement because community forest involve the rising of trees on public, not in private, public owned community land. For example, उसके लिए temple land, road sides, schools, railways, etc. Okay, answer for this question is option number A, which is only one is correct. And if we are talking about social forestry, social forestry is a management means a management and protection of forest and afforestation on barren land with the purpose of helping the environment, social and rural development. Okay, so next question is with reference to the basic lava, consider the following statements. Okay, first statement is it is fluid. Yes, it's a correct statement. Next is it is explosive eruption. No, it's it leads to explosive eruption. No, it's leads to do not explosive. Instead, it is tend to result in relatively gentle, effusive and effusive eruptions where lava flows steadily rather than explosively. Okay, so statement second is incorrect. Next is it commonly result in the formation of composite volcano. No, it's not a composite volcano, it's a sealed volcano. Okay, so answer for this question is only one is correct. Okay, next question is consider the following trees. First is mahogany, sweetania, greenland, greenheart, क्लोरोकार्डियम रोडिया. ओके, सो दोनों हो जाएगा हमारा कौन सा? एवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन
फॉरेस्ट के ट्रीज, एंड बोबन ये नहीं हो जाएगा, बोबाब ये हो जाएगा सवन्ना एंड सूडान क्लाइमेट टाइप का हो जाएगा. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओनली 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to with reference to National Commission for Scheduled Castes, consider the following statements. Okay, first is, it is a statutory body under the Article 338 of the Indian Constitution. Yes, it's a correct statement. Next is, it was spread from the National Commission for ST by the 89th Constitutional Amendment. ये भी सही हो जाएगा. And if you are talking about National Commission for Scheduled Castes, it's a constitutional body under Article 338. And अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर्स मेंबर होता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. एंड 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट का जो ये था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया था, जबकि ये पहले दोनों एक साथ थे. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल, कौन से आर्टिकल में आता है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ST के लिए आता है 338 A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल. एंड अगर SC की हम बात करते हैं तो वो आता है 338 B. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, विच इज 1 and 2 both are correct. Okay, let's come to the next question, which is, consider the following statements. The following statements regarding the tropical forest soil. Okay, if you are talking about the first statement, these soils are rich in humus and fertile in their natural state. Is it true? Yes, it's a correct statement. And if you are talking about next one is, deterioration of these soils is not possible even after repeat vegetation cycle. No, it's not a correct statement, because ये कि कर सकता है. Deterioration of these soils is possible even after repeated vegetation cycle. Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A, which is only 1 is correct. Next question is, consider the following statements with reference to favorable condition for formation of delta. The presentation of large oxbow lake is river course in the favorable condition formation of delta. No, it's not a correct statement, क्योंकि oxbow lake तब बनता है जब, for example, rivers are flowing and meandering. Okay, meandering rivers and deposited here, डिपोजिशन यहाँ करते जाएगा एंड धीरे धीरे ये यहाँ से कट हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सबो लेक. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेटमेंट. प्रेजेंस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट फ्रॉम द डेल्टा हेल्प इन द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट अराउंड द delta. It's also incorrect, because near the delta leads to the disappearance of sediment in the deep water of the adjoining sea. And ये ऑक्सबो लेक डिपोजिशनल ऑफ सेडिमेंट्स होता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ नाइदर 1 and neither 2 इज़ करेक्ट. इफ़ यू, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड कल हम बात करेंगे टेस्ट 4 के बारे में. ओके, जो कि जियोग्राफी का ही है. सो आप लोग रेडी रहिएगा. थैंक यू सो मच.